Today we will discuss about one of the important topic of union executive. We all know that the government have three important organs: legislature, executive, and judiciary. The executive what refers to generally in different manner we explain we learn the meaning of executive. But in terms of the political science, the executive the word refers to who execute the policy. As per Indian Constitution, we have three important organs of the government. An executive contains the president, the prime minister, the union council of ministers. And union council of ministers have the three category: cabinet minister, state minister, and deputy minister. Children, this is one of the important and interesting chapter. If students you took the interest to learn this topic, you can know the about the government system, Indian government system. Okay, so come to the topic. The important topic is of the union executive is a president. President means Rashtrapati. Okay. According to the Indian Constitution, please listen carefully. According to the Indian Constitution, all the executive power will centralize in the President of India. मैं repeat कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से. All the executive powers are centralized in the President of India, but President of India is indirectly elected. Now, sometimes students ask the question, sir, President is powerful or the Prime Minister is powerful? Dear students, both are important, both are powerful. But according to the principle of democracy, all the executive powers are centralized in the President of India, but in a real manner, the power is used by the Prime Minister of India, because democracy refers in that power can be used by such person who is directly elected. But it doesn't mean that President is not important. President is a head of the nation. Please repeat, please listen this sentence carefully. President of India is a head of the nation and Prime Minister is a head of the government. Now we will discuss in detail about the President of India. Yes, first of all, who can become the President of India? कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? आप बन सकते हैं, मैं बन सकता हूं, कौन बन सकता है? So we should follow the instructions given in the Constitution. A person who is age of 35 and above, इंडियन सिटीजन, इसका मतलब हो गया जो इंसान प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो 35 एंड अबो एज होना चाहिए, उससे कम एज नहीं होनी चाहिए. नंबर 1, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये भी हम जानते हैं. ठीक है. एजुकेशन इज नॉट ए मैटर एंड ही शुड हैव क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा. 35 एज बता दी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो. ही शुड नॉट हैंडलिंग एनी गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट जॉब में है, या हम इसे इस पॉलिटिकल साइंस के टाइम में ये भी कहते हैं, ही शुड नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट. पोस्ट ऑफ प्रॉफिट से मतलब है ऐसी कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए उनकी जिससे उनको कोई सैलरी मिलती हो. अगर ऐसा है तो वो कैंडिडेट जो है रिजाइन करेगा. चलिए, हम बात कर रहे थे इंडियन सिटीजन हो गए, ठीक है, 35 एज हो गई, कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये सब बेसिक क्वालिफिकेशन है जो इंडियन प्रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए. अब आता है इंडियन प्रेसिडेंट का टर्म. इंडियन प्रेसिडेंट के टर्म जो है 5 ईयर होता है, सब बच्चे जानते हैं जी. बट इंडियन प्रेसिडेंट कैन रिमूव फ्रॉम हिज एंड हर चेयर बाय द इम्पीचमेंट मोशन. इम्पीचमेंट मोशंस रेयर टू रेयर केस में अप्लाई होते हैं. हमारे इंडिया में आज तक किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन अप्लाई नहीं हुए. हर प्रेसिडेंट ने अपने जो टेन्योर है वो पूरे कंप्लीट किए हैं. तो इंडियन प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल पर्सन. तो हाउ वी विल असेस दैट इंडियन प्रेसिडेंट इज पावरफुल पर्सन? So now we should come to the point about the powers. Indian president power can be divided in 2 parts. बच्चों, मेरे पास कोई पेंसिल पेन नहीं है इस समय, मैं आपको कल समझा रहा हूँ, आप सुनते जाइए. इसे सुनिए. Indian president power can be divided in 2 parts. One is called general power and another is called emergency power. This lecture is important for class 8 to 12. In 12, this we discuss in detail. In 8th, whatever I am speaking now about the president power, that is sufficient. Okay. So basically, I am making this video for class 8, but it can be helpful for 10, 12 also. So when we talk about the general power of Indian president, तो रिमेंबर जनरल पावर में वो सब पावर आती है प्रेसिडेंट साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें जनरल टाइम में एट टाइम ऑफ पीस वो यूज करते हैं. इंडियन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर. With the consent of the Prime Minister, Indian President can appoint the member of Council of Ministers. And as I told you earlier, the Council of Ministers have 3 categories of ministers: Cabinet Minister, State Minister, and Deputy Minister.
Cabinet minister is very important ministers. They have important portfolio and they are very close to the Prime Minister of India and they are handling the important portfolio. Sometimes बच्चे पूछते हैं मुझसे सर पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब होता है डिपार्टमेंट, जिस मिनिस्ट्री के आप मिनिस्टर बनाए गए हैं उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं. अब इंडियन प्रेसिडेंट के मैं एक चीज बीच में रुक गया था मैं कि इलेक्शन कैसे होता है. According to the Indian Constitution, kindly listen carefully. According to the Indian Constitution, the Indian President is elected from the single transferable voting system. Single transferable voting system का मतलब ये होता है कि the candidate who is nominated is his and her name for the Indian President, election for Indian President, the voters. अब क्वेश्चन है वोटर्स कौन है? बच्चों सब ढंग से सुनते रहिए इस चीजों को. मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला अभी तक. इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम.